Hello aspirants and welcome to EduMiles Academy. In today's session we'll discuss some important newspaper articles from 23rd January 2023. For more study materials and updates, you may also join our WhatsApp group. We'll provide the link of the group in the description below. So this is the list of topics that we'll cover in today's session. Let's start. The first article of the day is about the World Economic Forum. Now, ये जो forum है, it is basically a kind of a gathering which takes place annually, and this basically is a gathering of leaders from business से आते हैं, politics and academia as well, to discuss various issues and mostly which are related to the global economy. So, from the global economy point of view, this article is going to be a really important one. So, the news says that 53rd edition of the annual World Economic Forum Summit was held in Davos, Switzerland. ठीक है, तो ये जो summit है World Economic Forum का ये हर साल होता है, and the place is fixed. It is always in Davos, Switzerland only. So this can be important for our prelims and also from mains it can be important from GS paper 3 growth and development, that is economic point of view, and also it has been taken from the Indian Express. तो पहले हम यहाँ पे बात करेंगे ये जो लोकेशन के बारे में दावोस. सो दावोस एज यू कैन सी दिस इज द प्लेस वे दावोस इज. ठीक है, सो स्विट्जरलैंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री विच एक्चुअली इज द प्लेस ऑफ हेडक्वार्टर्स ऑफ अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इट्स जेनीवा हियर, देन ज़्यूरिख इज हियर. ऑलराइट, सो दावो यू विल फाइंड इट ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ स्विट्जरलैंड. Right, so the 53rd edition of the annual World Economic Forum Summit was held in Davos. तो ये डेट है, the dates are not important. इस साल जो थीम है is quite important. So the theme is cooperation in a fragmented world. ठीक है, तो किस तरीके से यहाँ पे कोऑपरेशन के माध्यम से आप कह सकते हो कि वर्ल्ड इकोनॉमी को हम यहाँ पे एनहेंस कर सकते हैं. सो दिस इज बेसिकली थीम. सो यहाँ पे जो थीम है, तो थीम के बेसिस पर ये देखिए, द वर्ल्ड इज फेसिंग मल्टीपल चैलेंजेस सच एज इकोनॉमिक रिसेशन, देन क्लाइमेट चेंज, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड मच मोर. तो ऐसे टाइम में ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, नाउ इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी और इट इज गोइंग टू एक्ट एज एन इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म फॉर लीडर्स अक्रॉस द वर्ल्ड वुड कम टुगेदर एंड फाइंड सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम. सो द प्रॉब्लम्स अभी के टाइम में आप देखोगे मेनली दे आर रिलेटेड टू द इकोनॉमिक रिसेशन, देन क्लाइमेट चेंज एंड ऑल्सो जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट. आपको पता ही होगा अबाउट द रिसेंट वॉर्स के बारे में, राइट. सो इट इज अ काइंड ऑफ गैदरिंग ऑफ लीडर्स फ्रॉम बिजनेस से आते हैं, देन पॉलिटिक्स एंड एकेडमिया एज वेल, who come together at Davos to discuss the world's most pressing issues and which are mostly related to the global economy. तो बात करते हैं अबाउट द की हाइलाइट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर समिट ऑफ द करंट ईयर के बारे में. तो जो थीम है मैंने आपको बता दिया है, इट इज कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड. थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट for especially for the means perspective, and let's look at some of the other key points of this particular Davos summit of the current year. तो पहले बताया गया है about the coalition of the trade ministers on climate. तो यहाँ पे एक न्यू coalition फॉर्म किया गया है of the various trade ministers on climate, which was launched in this particular summit, bringing together over 50 countries to boost international cooperation on climate, trade and sustainable development as well. तो यहाँ पे जितने भी सारे स्टेक होल्डर्स थे, बी देम फ्रॉम द पॉलिटिक्स और मान लीजिए फ्रॉम द बिजनेस से, सो अक्रॉस द वर्ल्ड नाउ दे हैव स्ट्रेस्ड the value of free trade which has contributed to global economic growth and enhanced the humanities freedom. ठीक है, so free trade जो है, this is basically trading without barriers, so this is going to help or contribute in the global economic growth and enhance humanities freedom, remains a global public good that can never be forsaken. ठीक है, so यहाँ पे free trade का यहाँ पे इशू लिया गया है in regard to the coalition of trade ministers on the climate. नेक्स्ट यहाँ पे बात किया गया अबाउट द चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक के बारे में. तो ये काइंड ऑफ रिपोर्ट है. सो द चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक जो है, नाउ दिस वाज आल्सो लॉन्च व्हिच स्ट्रक अ कॉशियस टोन. तो यहाँ पे टोन देखिए क्या है, यहाँ पे जो वार्निंग साइन आप कह सकते हैं. सो इट बेसिकली सेज दैट 2/3 ऑफ दोज सर्वे, ठीक है, तो जितना भी यहाँ पे मेंबर स्टेट्स हैव बीन सर्वे, तो 2/3 ऑफ दोज सर्वे नाउ दे आर एक्सपेक्टिंग अ ग्लोबल रिसेशन दिस ईयर, दैट इज 2023 में. ठीक है, तो एज यू कैन सी दिस इज द पिक्चर जहाँ पे यू कैन फाइंड द कंट्रीज आर आइदर दे आर फेसिंग दे आर एक्सपेक्टिंग अ काइंड ऑफ वीक इकोनॉमिक ग्रोथ और यू कैन फाइंड दे विल बी एक्सपेक्टिंग अ हाई इन्फ्लेशन रेट. ठीक है, तो इवन द केस ऑफ यूएस आप देखोगे, चाइना के केस में, एंड इनफैक्ट आप देखोगे ये जो साउथ एशिया है, तो साउथ एशिया में भी देयर आर लिटिल चांसेस ऑफ हैविंग ऑफ विटनेसिंग अ काइंड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड देयर 26% ऑफ विटनेसिंग अ हाई इन्फ्लेशन एज वेल. ठीक है, so now ये जो सारा phenomena है, now these are possible, these are basically you can say these are highlighted in the chief economist outlook. It calls for the importance of reskilling in order to prepare current and future workforces. तो यहाँ पे जो भी workforce है, ताकि इनको और enhance करके उनको और ready किया जाए for the green transition, for the digital transition and also for the jobs of the future के लिए. सो और भी अगर हम यहाँ पे की पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव हैज बीन टेकन अप इन दिस पर्टिकुलर समिट व्हिच इज नोन एज द GAEA. सो इट स्टैंड्स फॉर गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन. तो GAEA दैट इज गाया जो है, नाउ दिस वाज लॉन्च्ड इट टू लेवरेज द फिलैंथ्रोपिक, दैट इज डोनेटिंग विद काइंड ऑफ बेनिवोलेंस कैपिटल टू अनलॉक फंडिंग फॉर द क्लाइमेट क्राइसिस. तो क्लाइमेट क्राइसिस को टैकल करने के लिए, जो मीनेज से इसे फेस करने के लिए और एक तरीके से इसे रिकवर करने के लिए यहाँ पे फिलैंथ्रोपिक डोनेशंस के बारे में बात किया गया है फ्रॉम वेरियस मेंबर स्टेट्स.
So it will leverage the philanthropic कैपिटल टू हेल्प जनरेट द यूएसडी दैट इज $3 ट्रिलियन यहाँ पे एक फंड क्रिएट किया जाएगा विच इज दैट ईच ईयर फ्रॉम पब्लिक एंड प्राइवेट सोर्सेज. तो यहाँ पे जो ये फंड है दिस विल नॉट जस्ट बी कंट्रीब्यूटेड बाय द कंट्रीज, तो यहाँ पे प्राइवेट एंड पब्लिक सोर्सेज वुड बी कंट्रीब्यूटिंग टू इट टू टैकल द क्लाइमेट चेंज एंड द नेचर लॉसेज बिकॉज ऑफ इट. So GAEA is a groundbreaking initiative supported by more than 45 major philanthropic public and private sector partners. So they are basically going to contribute to this particular fund, which would be forming a $3 trillion fund यहाँ पे बनेगा, and this will mainly be used for tackling the menace of climate changes. एंड ऑल्सो अबाउट द ग्लोबल कोलैबोरेशन विलेज के बारे में. तो देखिए आपको पता ही है कि ये जो हर साल जो यहाँ पे मीटिंग होता है, एज आई टोल्ड यू, इट टेक्स प्लेस इन डावोस, ठीक है. बट यहाँ पे माना गया है कि ओनली 1 day और ओनली लाइक 3-4 days ऑफ मीटिंग इज नॉट सफिशिएंट फॉर द ग्लोबल कोऑपरेशन रिगार्डिंग द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड. तो यहाँ पे ताकि जो मीटिंग्स है ताकि इसे और भी आप कह सकते हैं कि फ्रिक्वेंटली कराया जा सके, तो एक मेटावर्स में यहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाया गया है विच इज कॉल्ड एज द ग्लोबल कोलैबोरेशन विलेज, ठीक है. सो द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हैज अनाउंस्ड द रोल आउट ऑफ इट्स ओन मेटावर्स प्लेटफॉर्म. यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म इट इज अ काइंड ऑफ, आप कह सकते हो कि डावोस सिटी है, तो डावोस सिटी का एक डिजिटल वर्जन यहाँ पे बनाया गया है जहाँ पे द मेंबर स्टेट्स, यहाँ पे जो भी स्टेक होल्डर्स होगा पब्लिक और प्राइवेट, दे वुड बी वर्किंग इन कोलैबोरेशन. ऑलराइट, ये जो प्लेटफॉर्म है इसे कहा गया है ग्लोबल कोलैबोरेशन विलेज. नाउ द डिजिटल वर्ल्ड डिजाइन टू लुक लाइक द एक्चुअल टाउन ऑफ डावोस जैसा ये दिखेगा, इन विच द ऑर्गेनाइजेशन मीट्स once every year will supposedly allow for more efficient collaboration between the world leaders. एंड फाइनली अबाउट इंडियन पर्सपेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे विच इज रियली इंपॉर्टेंट. सो इंडिया का यहाँ पे मेंबरशिप का अगर आप देखोगे, सो दिस ईयर दैट इज 2023 जो है, इट मार्क्स 36 years ऑफ द फोरम्स कोलैबोरेशन विद इंडिया. एट द समिट इफ यू सी, इंडिया इज रिप्रेजेंटेड बाय हाई लेवल डेलीगेशन जहाँ पे आपको मिलेगा यूनियन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एंड बिजनेस लीडर, दैट इज सीईओ, एग्जीक्यूटिव मेंबर जो भी है, तो वो भी दे आर ऑल्सो गोइंग टू रिप्रेजेंट. तो सीएम के केस में यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी भी हो गया था. दैट इज महाराष्ट्र का जो सीएम है, दैट इज एकनाथ शिंदे. नाउ ही वाज सपोज्ड और ही वाज अबाउट टू विजिट द प्लेटफॉर्म टू ब्रिंग अबाउट, आप कह सकते हो कि टू ब्रिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया, बट देन अगेन उनको कैंसिल करना पड़ा फॉर सम कॉजेस, राइट. सो फोकस एरिया अगर आप देखोगे, इंडियाज फोकस एरिया एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिमेन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चरल लैंडस्केप एंड इट्स इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ स्टोरी. इंडियाज रेजिलियंस एंड अगर आप देखोगे आप इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी के बारे में, सो इंडिया हैज क्रॉस मेनी बैरियर्स आफ्टर द कोविड-19 क्राइसिस. तो कोविड-19 के टाइम में आपको पता ही होगा, बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, बिकॉज ऑफ द शटडाउन ऑफ द कंपनीज, और यहाँ पे जो भी कोविड इंड्यूस जो लॉकडाउन था उसकी वजह से यू विल फाइंड नंबर ऑफ इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड दैट फेस अ सेटबैक. बट इंडिया यू विल फाइंड इंडिया हैज अगेन बीन एबल टू रीपोजिशन इटसेल्फ एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी पोस्ट कोविड, ठीक है. एंड ऑल्सो अबाउट इंडिया एट 100 मतलब ये बेसिकली एक मिशन है इंडिया का, आप कह सकते हो एक विजन है इंडिया का, दैट इज इंडिया एट द 100 years of independence. So realizing the potential of a USD, यहाँ पे India has been targeting to become a $26 trillion economy, यहाँ पे प्लान है by the year 2047. So why 2047? Because it is the same year when India will be having like 100 years of Indian independence, right? So the report that is India at 100, realizing the potential of the USD 26 trillion economy, was launched by India on the sidelines of the summit. As per the report, as I told you, India's economy will reach, यहाँ पे anticipate किया गया है, यहाँ पे vision लिया गया है that India will be targeting or India will be reaching having a kind of 26 trillion US dollar economy by the year 2047. और ये जो year है, it is the 100th year of India's independence. It underscores that growth trajectory of the Indian economy, which is projected to be the highest of for any large economy over the coming decades. Now, finally, let's learn some facts about the World Economic Forum, which can be asked in examination. अब ये जो forum है, it is a Swiss non-profit foundation established in 1971 में इसे establish कर दिया गया था, based in Geneva, Switzerland. तो याद रखिएगा जो summit है ना, तो summit it takes place in Davos, but जो organization है, ये जो forum है, it is situated in Geneva, Switzerland. So it's recognized by the Swiss authorities as the international institution for public-private cooperation. As I told you, यहाँ पे it is not just represented by the government members or the government delegates, but यहाँ पे private और public दोनों का यहाँ पे cooperation रहता है. And about the mission, it is committed, ये जो World Economic Forum, it is committed to improving the state of the world by engaging business, political, academic and other leaders of the society to shape global, regional and industry agendas.
और अगर हम यहाँ पे फाउंडर के बारे में बात करेंगे, दिस इज ऑल्सो बीन आस्क्ड इन द यूपीएससी, लेट मी टेल यू, तो फाउंडर यहाँ पे इट इज क्लॉस स्क्वैब, ठीक है, सो ही इज द फाउंडर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। एंड अबाउट सम ऑफ द रिपोर्ट्स, आपको शायद पता होगा कि जीके का जो एग्जाम्स है या जीएस का एग्जाम जो होता है प्रीलिम्स में, आप देखोगे कोई यहाँ पे रिपोर्ट का नाम दे देगा और आपको पूछेगा कि ये कौन पब्लिश करता है, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है तो ये सारा रिपोर्ट पब्लिश करता है। एंड सब सर यहाँ पे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करेंगे, दिस ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट, सॉरी द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट एंड ऑल्सो द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये सब इंपॉर्टेंट है और इस सारा जो रिपोर्ट है इट्स पब्लिश बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ओनली। अब इसी टॉपिक के बेसिस पर यहाँ पे 3 प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज आंसर द कमेंट सेक्शन। The next article is about Assam's Charaideo Maidam, which has been nominated by India for the UNESCO World Heritage Site के लिए. Now, this can be important for our prelims because it is a news from the northeastern region, and also from mains it can be important from GS paper on art and culture point of view. Take it from the Economic Times. तो इसी के बारे में बात करेंगे। अब ये कि जो टर्म मैदाम है या मैदाम जो कहते हैं, so मैदाम्स आर बेसिकली अ काइंड ऑफ बरियल सही है, ठीक है। आपने शायद सुना होगा बुद्धिस्ट के टर्म में हम इसे कहते हैं स्तूप या स्तूपा कहते हैं, तो इन द केस ऑफ अहम डायनेस्टी में इसे मैदाम कहते हैं, ठीक है। तो इन देयर इज अ प्लेस कॉल्ड चराइडियो इन असम, इन द अपर असम पार्ट। तो ये जो मैदाम से इन चराइडियो डिस्ट्रिक्ट, नाउ दे हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर फॉर आप कह सकते हैं फॉर द अपकमिंग लिस्ट ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। So about if we talk about the Charaideo Maidam, so the Charaideo Maidam जो है, ये जो Charaideo it is also known as the pyramid of Assam, ठीक है। So this was the original capital of the Ahom kings. So you should understand कि Ahom यहाँ पे जब आए थे, so it was first king you should know about him, it is Sukafa. तो Sukafa जब आए थे, he came in the year he reached in लाइक इन द असम पार्ट, वो पहुंचे थे इन 1228 में। और जो पहला कैपिटल है उन्होंने एस्टेब्लिश किया था 1253 में, और वो कहाँ पे एस्टेब्लिश किए थे, उन्होंने एस्टेब्लिश किया था चराइडियो में। तो चराइडियो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर द अहम डायनेस्टी, ऑलराइट, इट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट प्लेस बिकॉज इट वाज लाइक इट यूज्ड टू बी द कैपिटल ऑफ द अहम किंगडम फॉर क्वाइट अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। सो चराइडियो जो है इट रिमेन्ड सिंबॉलिक सेंटर ऑफ अहम किंगडम इवन दो द कैपिटल ऑफ किंगडम मूवमेंट है। तो ये आप देखोगे कैपिटल जो है कभी शिफ्ट किया जाता है, मान लीजिए तो प्लेसेस लाइक शिवसागर हो गया या तो प्लेसेस लाइक जोरहाट, ठीक है। सो और आप देखोगे ये जो शिफ्टिंग के बाद भी दिस रिमेन्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। इट वॉज बिल्ड बाय चालोन सुकाफा, द फर्स्ट जो यहाँ पे फाउंडर है ऑफ द डायनेस्टी इन द अबाउट 1259, लेकिन जो कैपिटल है उन्होंने एस्टेब्लिश किया था इन 1253 में, ठीक है। सो लोकेशन, नाउ यू शुड नो दैट द लोकेशन इज इन अपर असम पार्ट and then it is also found in the foothills of Nagaland, ठीक है। तो ये जो region है it is lying at the foothills of Nagaland, and also you should know that it lies at a 30-kilometer distance from the Sivsagar town. Now Sivsagar town is another important town regarding the Ahom का जो dynasty है, ठीक है। So why is Charaideo known as the pyramid of Assam? So ये जो region है there is Charaideo, it contains sacred burial grounds of Ahom kings and queen. तो यहाँ पे जो बरियल्स है, अब ये बरियल जो है नाउ इट लुक्स लाइक अ पिरामिड, ठीक है, एंड इट्स आल्सो द प्लेस ऑफ द एंसेस्ट्रल गॉड ऑफ द याहुम। तो सम 42 टोम्स यहाँ पे पाए गए हैं ऑफ द याहुम किंग्स एंड क्वींस व्हिच आर एट प्रेजेंट एट द चराइडियो हिलॉक्स। All right, and finally if we talk about the architecture, it comprises a massive underground wall. I'll show you in the next slide. तो यहाँ पे it looks like a kind of a massive underground wall with one or more chambers होते हैं having domical superstructure, ठीक है, and covered by a heap of earthen mound. तो ये जो earthen mound है, you'll find जो external structure है ना, it basically looks like a hemispherical mound, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे it was also known as the pyramid of Assam. So this you can see the picture of the Maidam, ठीक है। So this is how the hemispherical part looks like, all right। तो इसी टॉपिक के बेसिस पर एक प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, kindly answer in the comment section. The next article is about the Parakram Divwas. So for this Divwas or for this day, the wishes have been extended by the governor of Arunachal Pradesh, who has extended the greetings to the people of the state on the occasion of Parakram Divwas. Now the most important point about the Parakram Divwas is that it commemorates the birth anniversary of Netaji. ठीक है, so Netaji हम प्यार से कहते हैं, but his actual name is Subhash Chandra Bose, who was a freedom fighter who played a very key role, a very important role in the Indian freedom movement. तो इसी के बारे में हम बात करेंगे about the Divas, and also we'll try to learn a little about Subhash Chandra Bose. The information can be important for our prelims and also from mains it can be important from GS paper or modern Indian history point of view. It has been taken from the Arunachal time. So about Subhash Chandra Bose, his birth was on 23rd of January 1897. So this is the reason why 23rd of January every year is observed as a Parakram Divas. ठीक है, पराक्रम का मीनिंग होता है करेज, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे उनका जन्म हुआ था कटक में, ओडिशा, बट ड्यूरिंग दैट टाइम 1897 का टाइम में इट बिलोंग टू द बंगाल प्रोविंस ओनली, ठीक है। तो प्रभावती दत्त बोस एंड जानकीनाथ बोस, दिस
region is not that important, but this date is important because we observe this particular day as the Parakram Divas. और ये जो हम जो celebrate करते हैं, this actually we are doing since 2021 से, right? So in 1919 he had cleared the ICS examination. अभी हम इसे UPSC कहते हैं. So Bose, however, resigned later. He was highly influenced by the teachings of Vivekananda and considered him as a spiritual guru. But if you talk about his political mentor, so political guru was Chittaranjan Das. ठीक है? तो spiritual guru you should notice Vivekananda and his political guru was Chittaranjan Das. ऐसा क्वेश्चन कभी आपको पूछा जा सकता है. And if you talk about his association with the Congress, so आप देखो कि he stood for unqualified Swaraj, ठीक है? So independence, which basically means independence, and opposed the Motilal Nehru report, which spoke for dominance status for India. अब देखिए यहाँ पे there's a difference between counter independence and the dominance status, ठीक है? तो ये जो स्वराज है ना, ये स्वराज जो टर्म है या जो डिमांड है, ये 1996 में ही ये लिया गया था in the जो कैलकाटा सेशन है, which was basically presented by Dadabhai Naoroji, ठीक है? तो if you have read the modern Indian history part, then you must be knowing about this incidents, right? तो आप देखो कि जो स्वराज का डिमांड है वो तभी लिया गया था, लेकिन देखिए उनका जो यहाँ पे आप देखो जो डिमांड था या जो विश था, इट वाज बेसिकली अनक्वालिफाइड स्वराज, ठीक है? तो आप देखो कि मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट लाया था जहां पे ही स्पोक अबाउट डोमिनेंस स्टेटस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमिनेंस स्टेटस? सो डोमिनेंस स्टेटस वाज द टर्म chosen to describe the position of the self governing member states, ठीक है? सो व्हिच आर स्टिल रेस्ट्रिक्टेड और कन्फाइंड टू द ब्रिटिश क्राउन. तो यूजुअली आप देखोगे यहाँ पे जो डोमिनेंस स्टेटस है इसका मीनिंग यही होता है कि जो क्राउन है ना, तो क्राउन यहाँ पे रहेगा, लेकिन जो रूलिंग पार्ट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नेंस पार्ट है ना, दैट विल बी डन बाय लोकल पीपल ओनली, ठीक है? इसी को कहा जाता है डोमिनेंस स्टेटस. बट ही दैट इज Subhash Chandra Bose, now he did not want to be under the authority of the crown, so this is the reason why he stood for unqualified Swaraj. A very important point. All right, he actively participated in the salt satyagraha of 1913. Now this you should know, this was part of the civil disobedience movement and vehemently opposed the suspension of civil disobedience movement. अब देखिए वो इतने यहाँ पे आप कह सकते हो कि he wholeheartedly participated in this particular civil disobedience movement. So he never wanted यहाँ पे जो ये movement है, he never wanted this movement to be suspended. But you should know, आपको शायद ये भी पता होगा कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, इट एंडेड विद द साइनिंग ऑफ द गांधी अर्बन पैक्ट इन 1931, ठीक है? The civil disobedience movement came to an end because of the Gandhi Irwin Pact. It was signed by Mahatma Gandhi and the then Viceroy of India, Lord Irwin, on 5th March 1931. ठीक है? तो ये सारा चीजें जो है, जो इवेंट्स है, वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम. In 1930s, he was closely associated with the left politics in the Congress, along with Jawaharlal Nehru and M.N. Roy as well. So Bose, that is Netaji, won the Congress presidential election at Haripura in 1938. So ये सेशन में he was the president. आपको पता होगा कि INC का हर साल सेशन होता है. कुछ यहाँ पे सेशन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है. आउट ऑफ देम दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट जो कि हरिपुरा में होता है, व्हिच इज अ प्लेस इन पंजाब में, ठीक है? सो दिस सेशन में, INC सेशन में, इट वाज प्रेसिडेंटेड बाय नेताजी. एंड ऑल्सो इन 1939 एट त्रिपुरी ही वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अगेंस्ट गांधीजी's कैंडिडेट पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है? बट अगेन बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस, बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट विद महात्मा गांधी, ड्यू टू द आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस विद गांधीजी, बोस ने ये जो पोस्ट है उन्होंने रिजाइन कर दिया था एंड ही आल्सो लेफ्ट कांग्रेस during this period only. So Rajendra Prasad was appointed in his place during this session of Tripuri. He also founded a new party. ये बहुत important है, इसे कहा जाता है forward bloc. So this basically works under the Congress only. The purpose was to consolidate the political left and also major support base in this home state, that is Bengal. And also another important fact about him is that, so during the World War II in Southeast Asia, Netaji ने यहाँ पे form किया था. He basically formed and led a 5,000 man force, which were known as the Azad Hind Fauj. ठीक है? So under the slogan Delhi Chalo. Now this was also a very important, you can say, initiative of Netaji Subhash Chandra Bose. The next article is about Gyamar Nikum, who has signed an important deal with a football club, which is known as the Mumbai City Football Club. This can be important for our prelims, not for the mains, but it has been taken from the Arunachal Times. So Wonder Boy कहा जाता है इनको, Gyamar Nikum, who has signed a deal with the Mumbai City. So Mumbai City Football Club has signed Arunachal's Wonder Boy Gyamar Nikum from Rajasthan. तो पहले he was playing for Rajasthan United, now he'll play for Mumbai City Football Club. Under a 5-year contract sign किया गया, amount in rupees 60 lakh. तो इतना ये vast amount का जो deal है, this is said to be the biggest professional football transfer involving any Arunachali football player. Okay? So the 18-year-old football prodigy, now he will be playing in the Indian ISL, that is Indian Super League, जहाँ पे NEUFC, the Northeast United भी एक club है, right? So which is the top Indian professional league. Now Mumbai City FC is an Indian professional football club which is based in Mumbai, Maharashtra, which competes in the ISL. Now this you can see is the picture of the Wonder Boy, who is known as Gyamar Nikum. तो इसी टॉपिक के बेसिस पर एक पुलिस प्रैक्टिस क्वेश्चन है, kindly answer in the comment section. Now this was the question that I asked in the previous video. Let's look at the answer. So the answers are,
तो पहला आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नहीं, एक एनजीओ पब्लिश करता है, दैट इज प्रथम, तो यहाँ पे 1 गलत हो जाता है, 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर। एंड इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर फर्स्ट पॉइंट, दे आर पैरेलल, ये पैरेलल नहीं है, जो ये वेस्टर्न घाट्स में यू विल फाइंड द ब्रांच ऑफ माउंटेन इज परपेंडिकुलर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो ये गलत हो जाता है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज 2 and 3। There were some more questions that are asked in the previous video. Let's look at the answers. So the answers for the questions are: so Rongli Mibang, she was a person who was known for her initiative for a contribution to women's education, and the Italian hydroelectric project, jo was recently in the news, and belongs to the state of Arunachal Pradesh. So for now, that was all from our side for this session. Thank you so much for joining in. We'll meet the next one. Bye bye and take care.